हाय गाइस, मैं चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये सीबीएसई का सारांश दिया गया है इसमें थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट फार्मूला दिया है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वेयर एन वेक्टर इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। General equation of plane in Cartesian form is x plus by plus cz plus d is equal to 0. A, B, C are direction of normal to the plane. Equation of plane not passing through the origin, which makes intercept A, B, C on the axis is x by A plus y by B plus z by C is equal to 1. Intercept equation of plane passing through the non-collinear point x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 equal to x minus x1 y minus y1 z minus z1 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 determined form is equal to 0 3-point form. Shorter distance between two lines. Distance between two non-parallel lines r vector is equal to a vector plus 2v vector and r vector is equal to a2 vector plus s into v vector. v vector गुणे v1 vector गुणे v2 vector डॉट a2 vector minus a1 vector बटे v1 vector क्रॉस v2 vector. Line are coplanar if a2 vector minus a1 vector v1 into v1 into v2 vector is equal to 0. Distance, shortest distance between two parallel lines r vector is equal to a1 vector plus t into v1 vector. या r vector is equal to a2 vector plus s into v1 vector. यानी v1 vector क्रॉस a2 vector minus a1 vector बटे mod of v1 vector. नॉन पैरेलल लाइन x minus x1 बटे a1 is equal to y minus y1 बटे b1 z minus z1 बटे c1. देखो आप x minus x2 बटे a2 is equal to y minus y2 बटे b2 is equal to z minus z2 बटे c2. कोप्लेनर if x minus x1 y2 minus y1 z2 minus z2 a1 a2 फिर y के b1 b2 c1 c2 डिटरमाइंड फॉर्म is equal to 0 है. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. तो नेक्स्ट वीडियो लेते हैं.